Hey, what's up, guys? मैं रोनी डोपियानोब से and some explosive details have actually leaked regarding the fight between कपिल शर्मा and सुनील ग्रोवर। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि ज़रूर something terribly bad has happened between them, जिसके लिए not only did सुनील ग्रोवर leave the show, but even Ali Asgar and Chandu Prabhakar boycotted the show and they didn't come for the shoot on Monday evening. So all these details have been leaked by a person who is claimed to have traveled on that 12-hour flight. तो हमें लगता है दिस माइट बी एन इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इतने डिटेल्स में अगर इन्फॉर्मेशन लीक होती है देन दिस हैज़ टू बी एन इनसाइडर who was there present with them, yeah, a part of the team. So according to that person who was there on the 12-hour flight, Kapil was drunk on an entire bottle of Glyfindic and at the same time उनके टीम मेंबर्स ने जब खाना शुरू कर दिया कैबिन क्रू से खाना लेके, now that is what ticked Kapil off. तो कपिल ने ये बोला कि जब मैंने खाना शुरू नहीं किया है तो तुम लोगों ने खाना कैसे ले लिया। तो जब इस पे बवाल शुरू हुआ, दी एंटायर कपिल शर्मा शो यूनिट स्टार्टेड रिटर्निंग द फूड टू द कैबिन क्रू, और इसी वक्त सुनील ग्रोवर जो थे, ही गॉट अप फ्रॉम हिज सीट एंड ही ट्राइड टू काम कपिल डाउन एंड दिस इज व्हेन ऑल हेल ब्रोक लूज. सो नाउ अकॉर्डिंग टू द सोर्स, Kapil got terribly mad. He took off his shoe and he threw it at Sunil Grover. And he also caught him by the collar and slapped him multiple times. And then Kapil started abusing in Punjabi. जिसके बाद the cabin crew members of the flight asked the Kapil Sharma team to calm Kapil down. तो इस पे Kapil Sharma lost his temper even further and said something like, तुम लोगों को मैंने बनाया है, सबका करियर खत्म कर दूंगा, तुम टीवी वाले समझते क्या हो, सबको निकाल दूंगा. एंड देन ही टर्न टू सुनील ग्रोवर एंड दिस इज व्हाट ही सेड, गया था ना तू, आया ना वापस मेरे ही पास. नाउ दिस वाज इन रिगार्ड्स विद the earlier show that Sunil had started after quitting Comedy Nights with Kapil, and this is what Kapil was actually hinting to कि भाई गया था ना तू अपना शो शुरू करने, आया ही ना तू मेरे पास ही वापस. So then the arguments got worse and Kapil Sharma started abusing in Punjabi, and basically all this was audible in the economy cabin of the flight. And the worst thing was when the cabin crew members even warned कि अगर Kapil didn't calm down and if he didn't stop shouting and screaming, then they would have to call security on landing. तब कपिल शर्मा even went to the extent of saying, अरे ये लोग समझते क्या है, इन सबका करियर मेरे वजह से है. The Hindustan Times, which actually published this entire thing, they tried to get in touch with Sunil Grover, to which he said that he was not going to be available for any interviews for the next few coming days. और at the same time हम आपको ये भी बता दें कि Sunil Grover is not bound by a contract for the Kapil Sharma show. He has a contract with Sony Entertainment Television that is set. So even if Sunil Grover decides to quit the Kapil Sharma show, I don't think that Sony Entertainment Television will be able to take any credible legal action against Sunil Grover कि भाई इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो था उन्होंने वायलेट किया है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के साथ. सो सुनील ग्रोवर कैन ईजिली क्विट द कपिल शर्मा शो वेन एवर एंड एट विच एवर पॉइंट ऑफ टाइम ही फील्स लाइक. लेकिन अगर कोई भी इतने डिटेल्स में अगर एक रिपोर्ट निकालता है, दैट टू अ पेपर लाइक हिंदुस्तान टाइम्स, तो इट इज़ वेरी मच श्योर कि द सोर्स दैट दे हैव इज़ वेरी वेरी क्रेडिबल. क्योंकि अगर आप बिना एक क्रेडिबल सोर्स के ऐसे इन्फॉर्मेशन निकाल देते हैं एंड इफ दैट कम्स आउट टू बी फॉल्स, देन नॉट ओनली कपिल शर्मा, देन even Sony Entertainment Television or set is actually going to sue you for releasing something as controversial as this. Now everything hangs in a very delicate balance, क्योंकि there is no way I think Sunil Grover is actually going to come back to the show. Ali Asgar and Chandan Prabhakar have already boycotted the show and they haven't showed up for the Monday shoot. और अभी नवजोत सिंह सिद्धू के साथ भी इतना बड़ा इशू चल रहा है कि will he be able to continue the Kapil Sharma show with the ministry portfolio that he now enjoys. तो नीचे comment section में ज़रूर बताइएगा कि what do you feel about this entire unfortunate incident that has happened, and if you believe that the Sunil Grover, Ali Asgar and Chandan Prabhakar have done the right thing by boycotting the Kapil Sharma show.